Okay, so V1 equal to V1 dash plus IE, that means R1 plus JX1. Not R1 plus JX1. So this is all about the no load phasor diagram and their voltage relation towards the primary side. Okay. So similarly, can you draw the phasor diagram for the load condition? हो जाएगा ना? Yes sir, yes sir. क्या पार्ट ऐड करना पड़ेगा उसमें? सर लोड लगाना होगा. लोड लगाना पड़ेगा, तो जस्ट सेकेंडरी साइड का कंप्लीट करना पड़ेगा. दैट मींस R2 एंड X2 का फेजर डायग्राम E2 के साथ. यस सर, इंडक्टिव लोड सर, इंडक्टिव लोड लगा के कर लेंगे. ओके, हो जाएगा ना? दोनों पे ड्रॉ कर ले, लैगिंग लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड. ओके, सो आई थिंक कैन यू. ठीक है. ओके, so just we stop here and in the next class we will continue another things. Okay, so can we stop here? Yes sir, yes sir. Okay, so thank you to all of you. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Okay.